Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on West Bengal SET exam in English question paper of uh, the previous year 2023. So today is the first part of the video. In this week we will discuss the whole question paper as per your request. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NDA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 3 years of teaching experience. Moreover, I have also taught the individual online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening Archana, welcome. So these are the timings of your classes Monday to Thursday at 8:30 p.m. Don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so without much delay, let's start today's session. Today we will discuss 30 questions from this recent question paper of West Bengal SET. तो चलो आपका पहला क्वेश्चन है which work was not published in 1922 which work was not published in 1922 Siddhartha do we know elegies 6 characters in search of an author or cities of the plain by Marcel Proust. Good evening Pabli, welcome. So Siddhartha, you all know this is a very famous novel by Herman Hesse. Do you know Elegies is a poetry collection written by Raina Mary Rilke. Okay, 6 characters in search of an author. This is by Luigi Pirandello and Cities of the Plain by Proust. So which one was not published in 1922? Good evening, sir. Welcome. So it is talking about not published. So you all know that 1922 is a very groundbreaking year in the field of English literature, especially during the modern era. And generally we know that 3 most important modern works were published in 1922. One is The Wasteland, then Jacob's Room by Virginia Woolf and Ulysses. तो कोई भी ऑप्शन तो यहाँ नहीं है यहाँ पे बोला है which work was not published in 1922. Good evening Bengali and truly Indian, welcome. अच्छा बाकी saying सी देखो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है because this is a very confusing question. If you look at the publication year, then Siddhartha was published in 1922 definitely. So this option नहीं होगा. लेकिन ये 3 ऑप्शन में हमको डाउट है क्योंकि एज पर द क्वेश्चन all the 3 options needs to be correct. So do we know Elegies का पब्लिश हुआ था? Do we know Elegies पब्लिश हुआ था 1923 में? ये भी हो सकता है, ठीक है. 6 characters in search of an author that is published in 1921. And Cities of the Plain by Marcel Proust, this was published in 1998. ठीक है. So these are the publication year. अब देखो यहाँ पे बोला है not published in 1922. So all the 3 options seem to be correct. So I don't know whether the question will be dropped or not. But हो सकता है कि इसमें option number D हमको बहुत तरीके से सही लग रहा है because इसमें देखो difference बहुत ज्यादा है. 1921 में actually it was performed 6 characters in search of an author. And do we know Elegies का भी जो publication year मतलब according to internet हम जो देखे उसमें बोला जा रहा है कि 1923 में publish हुआ था as a collection. Next question है, this is a very direct question. Shelley's The Mask of Anarchy was occasioned by the French Revolution, the Peterloo Massacre, the Anglo-American War, the Anglo-French War. This time I have seen that set question paper, in set question paper, most questions are direct from the sources of the text or who wrote the book, this kind of question, the very basic matching of authors and works, opening lines with the poems. So in that sense, ये net
कि कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हमको लगा। हम अभी पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं किए, बट आई हैव डन हाफ ऑफ द पेपर। 50 क्वेश्चन हम अब तक सॉल्व किए, उसमें से आज हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमको कंपैरेटिवली इजी लगा, बट लेट्स सी व्हाट happens, but there are some doubtful questions definitely. Okay, so Kelly's marks of anarchy. Good evening, Vedyasti. Welcome. Yes, option number B is the correct answer. There is no doubt. That is Peterloo massacre. Very easy question. Very to the point question. That what is the occasion? मैंने आपको ये बहुत बार बताया था कि सेटिंग ऑफ द पोएम, सेटिंग ऑफ द नॉवेल, सबटाइटल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेट में ये हमको लगा कि इन्होंने फोकस दिया है। So yes, Peterloo massacre is the correct answer. Option number B. Next question: who introduced rhyme royal in English poetry? This is the easiest question. I think इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता. William Langland, Geoffrey Chaucer, Thomas Malory, or John Garp? Who introduced rhyme royal in English poetry? What will be the answer? Okay, option number B, Chaucer. Yes, absolutely right. Chaucer is the correct answer. There is also no doubt regarding that. Okay. Next question. Charles Lamb wrote under the pseudonym Elia for which periodical? For the first time, this pseudonym appeared in which periodical? London Magazine, The Spectator, The Tatler, Blackwood's Magazine. What will be the answer? Lamb wrote under the pseudonym Elia for which periodical? London Magazine, The Spectator, The Tatler, Blackwood's Magazine. Yes, in Troilus and Cressida, absolutely right. Okay, Blackwood's Magazine. Kapri is also saying the Blackwood's Magazine. No, it is not Blackwood's Magazine, it is London Magazine. Option number A. It is London Magazine. Sorry, it is London Magazine. Option number A. Okay. Question number 5. Agitprop theatre does not have the following characteristics. Does not have. It takes drama out of the private space of theatre to a more public space. It is a vehicle for political activism. It deals with depoliticized representation of bourgeois life and manners. It consists of short episodic scenes. So what will be the answer? Yes, Blackwood's Magazine is in the Victorian time. So agitprop theatre does not have the following characteristics. What will be the answer? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एजिटप्रॉप थिएटर, इसको भी थोड़ा सा बता दे। तो एजिटप्रॉप, दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम रशियन लैंग्वेज एंड एजिट मींस एजिटेशन। So it simply means the theater of agitation. If we translate it into English, theater of agitation, propaganda. In that sense, it talks about propaganda. So basically, it is a kind of particular form of
theater, not exactly theater, but it refers to a group of media, popular media, like literature, drama, films, um, pamphlets and periodicals, ठीक है, or different other art forms which specifically talks about communism, and obviously it is explicitly political in nature. So this is the basic introduction to agitprop. अब आ रही है इसके आंसर में. So yes, as per the options given here, I think option number C should be correct, because as agitprop is talking about communism, तो political चीजें तो उसमें जरूर है. And this is also a kind of true that it takes out drama of the private space to a more public space, in the sense that it includes not only the form of drama, but it also includes the other forms of popular media, as I have just said. So I think option number C will be the correct here, because of this word depoliticize. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का ही बात होती है, depoliticize का कुछ नहीं है. तो in that sense option number C should be correct, and episodic scenes भी इसमें होता है. तो I think C इसका correct answer होना चाहिए, but देखते हैं अब आंसर की में क्या. Yes, agitational propaganda. Next question. Who wrote the Black Hill? So this kind of direct questions are very much there in this year's set question paper. कि ये बुक किसने लिखा था, ये वर्क कब पब्लिश हुआ था, what is the subtitle, what is the source. So who wrote the Black Hill? A very important work, Mamangai, Temsula Au, Mitra Fukan, Isterain Kaya. Mamangai, Bengali and truly Indian saying. Okay, Bhavti is also saying A, Mamangdai. Yes, absolutely correct answer. It is Mamangdai. Option number A is the correct answer. Next question, question number 7. This is another very easy question. Society is all but rude to this delicious solitude. Line from which poem? The garden to his the garden to his coy mistress, the temple, the flea. Society is all but rude to this delicious solitude. If you, even if you don't know the answer, you can very well try for a smart guess, because there is a lot of clue here. Okay, so क्या होगा आंसर बताओ. Society is all but rude to this delicious solitude. Which poem? Okay, Bengali and truly Indian is saying the garden. Option number A. Yes, very good, absolutely right. It is the garden. And देखो ऑप्शन में ये थोड़ा और भी आसान कर दिया है कि नेचर रिलेटेड ऑप्शन यही एक आपको नजर आ रहा है, एंड इट इज डेफिनेटली अ नेचर पोएम, बिकॉज ये लाइन से ही पता चल रहा है कि सोसाइटी इज ऑल अबाउट ड्यू टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड. सो इट मींस दैट सोसाइटी का मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज है वो ये सॉलिट्यूड से रूठे हुए. सो इन दैट केस बोथ आर contradictory and both are in conflict. So obviously the garden will be the correct answer, written by Andrew Marvell. Yes, right. Next question, question number 8. देखो subtitle से question आया है. Tennyson's Maud was originally subtitled as the melancholy, the madness, the frenzy, the disorder. Direct question from subtitle. Tennyson's Maud was originally subtitled as what? What will be the answer?
Yes, in the poem there are references of various fruits. Absolutely. So delicious can be a clue. अच्छा, इसका आंसर बताओ. मॉड का सबटाइटल क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द मैडनेस. मॉड और द मैडनेस, दिस इज द सबटाइटल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आ. There is a matching. Some name of the theorists are given एंड उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में दिया है. तो सिंपली कौन सा टर्म किसने कॉइन किया है, किसने यूज किया है, वेरी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. तो लिस्ट 1 में नाम है कार्ल मार्क्स, जे एल ऑस्टिन, लियोटार एंड फ्रॉइड. एंड लिस्ट 2 में मेंशन है कॉन्सेप्ट्स का नाम स्पीच एक्ट थ्योरी, लैंग्वेज गेम्स, कैथेक्सिस, कोमोडिफिकेशन. अब आपको मैच करना है. अगर आप एक को मैच कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली बाकी हो जाए. ना आसान ऑप्शंस दिया है इसका, कोई भी कंफ्यूजन की जगह नहीं है. एक या दो अगर आपको पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. एंड नेम्स आर आल्सो नॉट अनफैमिलियर टू यू. तो क्या होगा आंसर बताओ. बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट भी है. Okay, Papri is saying option number 4 or D. Acha, Papri is saying option number A. Yes, very good. Option number A is the correct answer. और ऑप्शन नंबर 1. तो कार्ल मार्क्स ऑब्वियसली मार्क्सिज्म के साथ कॉमोडिफिकेशन जाते ही आप गेस भी कर सकते हो. अच्छा, जे एल ऑस्टिन has given a very famous idea of speech act theory. लियोटार ऑब्वियसली मॉडर्निज्म, पोस्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो लैंग्वेज गेम्स ऑप्शन नंबर सी के साथ 2. एंड फ्रॉइड का टर्म है कैथेक्सिस. अब कैथेक्सिस क्या है हम थोड़ा बहुत बता देते हैं. कैथेक्सिस इज नथिंग बट एसोसिएटेड विद लिबिडो. So we have read about libido. It is the kind of sexual drive जिसको हम कहते हैं sexual energy. तो कैथेक्सिस means the way or the amount of mental energy you can devote to any particular idea or person. मतलब आप अपनी सारी एनर्जी लगा देते हो किसी एक आइडिया के ऊपर, किसी एक पर्सन के ऊपर. तो इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं कैथेक्सिस. एंड इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस. ठीक है, इसमें मतलब जो एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, मेंटल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ लिबिडो. It is mainly talking about the energy of libido which you are devoting to any particular idea or person for a specific period of time. So that is called cathexis. Cathex से ये word आया है. Cathec means to concentrate or to devote a large amount of thing to some for some period of time. So cathex से आया है cathexis. So option number 1 is the correct answer here. Absolutely. Yes, language क्यों भी होता है. Absolutely. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आसान क्वेश्चन है. हु कॉइन्ड द टर्म पोस्टमॉडर्न? देरिदा, फूको, लियोटार, लखा. वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ने के टाइम ही आपको ये पढ़ना ही होगा. हाँ, अभी इसके नाम बताए. तो क्या होगा आंसर? What will be the answer? Who coined the term postmodern?
ओके, तो यस एब्सोल्युटली राइट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोटार, एंड बेसिकली ही इज credited with the first use of the term in the idea of पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब आज हम जिस तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म को समझते हैं उस आइडिया में पहली बार इसको यूज किया था लियोटार। एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, death of an author published under the pseudonym Adrian Marcin is a groundbreaking literary experiment written by. This is a new information for me also, because death of the author, रोला बार्ट की तो हम सब जानते हैं, but death of an author, it is a different work, हमको भी पता नहीं था, हम अभी आंसर सर्च करते टाइम पता चला। तो it was published under pseudonym। तो एक्चुअली में इसका ऑथर कौन है? स्टीफन मार्च, ब्रेट स्किलकर, टीम बाउचर, जेनिफर ले। Yes, actually the term was coined by Charles James. Actually, Lyotard popularized it and he used it in the context of today's idea of postmodernism, but Charles James is not in the option, so Lyotard will be the correct answer. So, death of an author, the postmodern condition, a report on knowledge. Yes, in that particular book, Lyotard used this term, absolutely. So, death of an author published under the pseudonym Adrian Marcin is a groundbreaking literary experiment by pseudonym से आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। तो क्या होगा बताओ इसका आंसर? Not talking about Rolla Barthes, it is a different work written by a different writer. यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन मार्च। हम क्यों बोले कि आप गेस लगा सकते हो, यहाँ से मार्चिन से मार्च अगर आप गेस कर सकते हो तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन मार्च। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which text is an introduction to Canadian literary identity? Which text is an introduction to Canadian literary identity? Survival, The Stone Angel, Runaway, 3-Day Road. Which text? क्या होगा आंसर? Which text is an introduction to Canadian literary identity? क्या होगा आंसर? ओके, तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइवल बाय मार्गरेट अटवुड। अच्छा, इसका भी सबटाइटल याद रखना, अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। A thematic guide to Canadian literature. So from this subtitle itself, you can understand that it is talking about introduction to Canadian literary identity, published in 1972. Survival. Yes. So option number A is the correct answer. Chalo, next question. Again, matching दिया है, very interesting question. There are some settings and all are talking about some kind of epidemic. ठीक है, तो इसमें कुछ सेटिंग्स दिया है, आपको मैच करना है कौन सा सेटिंग कौन सा नॉवेल का है। एकदम वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो लिस्ट वन में है प्लेग इन्फेस्टेड अल्जीरिया, कॉलेरा एपिडेमिक इन इटली, ब्लैक डेथ इन फ्लोरेंस, ग्रेट प्लेग इन लंदन। दिस कैन आल्सो बी डन
very easily if you can match any one of the option. एक ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो एंड देयर आर नंबर ऑफ क्लूज. अगर आपको नहीं भी पता है तो जगह के नाम से आप नॉवेल का नाम, अगर आपको ऑथर का नाम पता है तो यू कैन इजीली मैच इट. ठीक है, तो बोलो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का. व्हाट विल बी द आंसर? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए और 1. Option number 1 is the correct answer. So plague infested Algeria in Albert Camus the plague. Okay, cholera epidemic in Italy, that is obviously Death in Venice by Thomas Mann, जिसमें वो छोटा बच्चा का कैरेक्टर था. Black Death in Florence, ऑप्शन नंबर सी के साथ है डेकामेरॉन by Boccaccio. And Great Plague in London, ये तो सबको पता है, Journal of the Plague Year by Daniel Defoe. So absolutely option number 1 is the correct answer. Moving on to question number 14. The English language borrowed words from other languages. Match the following. ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर द सोर्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. ये तो पॉसिबल नहीं. ठीक है, तो आप गेस जरूर कर सकते हो. तो 4 वर्ड दिया है. वर्ड्स तो बहुत ही कॉमन है. हैबिट, कॉफी, कॉकरोच, ऑपेरा. एंड 4 लैंग्वेजेस आर देयर. अरबिक, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन. तो मैच कर कि कौन सा इंग्लिश वर्ड कौन से लैंग्वेज से लिया गया, बोरो किया. Yes, Defoe wrote about the plague in London. This is very easy. You can very well guess it. And इटली से आप पता लगा सकते हो डेथ इन वेनिस का, बिकॉज वेनिस के साथ इटली, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इन दैट सेंस स्मार्ट गेस भी कर सकते. तो बहुत ही आसान था. इन दैट सेंस मैचिंग का क्वेश्चन में ही ज्यादातर प्रॉब्लम होता है. एंड आई हैवंट सीन सो मच क्वेश्चंस ऑन क्रोनोलॉजी. बस एक ही अब तक हमको नजर में आया है 1922 वाला. इससे इसके बाद और ज्यादा क्वेश्चन जैसे नेट में देता है एकदम पूरा मैच करना, उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था इस बार. एंड क्वेश्चन इज वेरी रीजनेबल. जो मतलब आना चाहिए, लिटरली पूछना चाहिए, वही पूछा गया. सबटाइटल से, सेटिंग से, सोर्स ऑफ द टेक्स्ट वो भी आगे में है. तो वेरी बेसिक क्वेश्चंस आर देयर. ओके, पापड़ी सिंह ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 14 का नो, इट इज नॉट ऑप्शन नंबर डी, इट इज ऑप्शन नंबर ए. हमको जितना इंटरनेट में सर्च करके मिला उससे हमको ये मिला कि हैबिट इज फ्रॉम फ्रेंच, कॉफी इज फ्रॉम अरबिक, कॉकरोच इज फ्रॉम स्पेनिश एंड ओपेरा इज फ्रॉम इटालियन. हाँ, इससे आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो ओपेरा के साथ इटली. ठीक है, वहीं से आपका सारा चीज हो जाए. तो यस, 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. Another very easy question. Who developed the idea of pantisocracy? We have discussed about pantisocracy. So it is a kind of utopian community, एक ideal landscape जिसके बारे में बात की थी. कौन से दो romantic poets थे? Wordsworth and Robert Southey, Southey and Shelley, Coleridge and Southey, or Coleridge and Wordsworth? Even without option you can answer. So very easy question. Who developed the idea of pantisocracy? Yes, Papi, absolutely right. Samuel Taylor Coleridge and Robertson. इसमें तो कुछ डिस्कस करने का है ही नहीं. Yes, C is the correct answer. Moving on to next question. Which novel was celebrated by Neeraj C. Chaudhary as the finest novel in English language with an Indian theme?
ये भी हम आपको बताए थे इन माय क्लास, वट एवर आई हैव टॉट यू, कि अगर कोई फेमस राइटर किसी दूसरे राइटर के वर्क्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल वन राइटर इज गिविंग अ निकनेम टू अनदर राइटर, जैसे हम जब डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले, उसमें एक था कि जॉर्ज पील ने मार्लो को एक निकनेम दिया था कि अ, कुछ एक निकनेम था, अभी हमको याद नहीं आ रहा। तो ऑल दिस थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई राइटर ने दूसरे राइटर के बारे में, दूसरे कोई नॉवेल्स के बारे में कुछ कमेंट किया है कि दिस इज द बेस्ट नॉवेल और इट रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर थीम इन द बेस्ट वे, तो वो आपका इम्पोर्टेंट, मतलब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में वो आ सकता है। तो देखो यहाँ पे भी एक वही क्वेश्चन है कि नीरज सिंह चौधरी ने, वो भी एक फेमस राइटर है, वो कौन से नॉवेल को ये बोला था कि फाइनेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम। Rudyard Kipling's Scheme, A Passage to India by E.M. Forster, Night Runners of Bengal, or The Jewel in the Crown. So, finest novel in English language with an Indian theme. तो क्या होगा? Yes, पापी, on the bank of Susquehanna River, पैंतीस अप्रैल से उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। अच्छा, ओके। Theology was my special paper. Okay. So Pablo is saying option number B, Passage to India. No, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किम by Rudyard Kipling. Option number A is the correct answer. चलो, next question. Who is described by Matthew Arnold as the scantiest and frailest of classes? Again, same kind of question. One critic is talking about another. So, who is described by Arnold as the scantiest and frailest of classics? Dryden, Pope, Robert Burns, Thomas Gray. तो क्या होगा आंसर? एंड ऑब्वियसली ये लाइन कहाँ पे है? द स्टडी ऑफ पोएट्री, मैथ्यू आर्नल्ड्स फेमस क्रिटिकल वर्क। तो इन स्टडी ऑफ पोएट्री किसको मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला था स्कैंटिएस्ट एंड फ्रेलेस्ट ऑफ क्लासिक्स? तो लाइन कुछ ऐसा था कि ही इज द स्कैंटिएस्ट एंड फ्रेलेस्ट ऑफ क्लासिक्स बट ही इज द क्लासिक। तो वो किसके लिए ये चीज बोला? एग्जैक्ट एकदम, मतलब लाइन से क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म के लाइन से। Yes, Papi, absolutely correct. It is Gray. Very good. Thomas Gray is the correct answer option. चलो, next question. Again मैचिंग दिया है, इजी मैचिंग है, ऑथर के साथ वर्क को मैच कर। अगर आपको एक पता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, सीडी नरसिम्हा, आनंद कुमार स्वामी, मीनाक्षी मुखर्जी, गौरी विश्वनाथन। Realism and reality, masks of conquest, the swan and the eagle, the dance of Shiva. तो एक हमको एक्चुअली एक ही पता था, उससे ही मेरा पूरा मैचिंग हो गया। हम जब क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ से एक ऑप्शन हमको पता था, बाकी ऑप्शन नहीं पता था, बट आई कैन मैच इट वेरी इजीली। तो क्या होगा? Okay, Bapti is saying option number 3. Yes, absolutely right. Option number 3 is the correct answer. एक ही से आपका मैचिंग हो जाएगा। गौरी विश्वनाथन का वर्क है मास्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो डी के साथ 2, डी के साथ 2 एक ही ऑप्शन में है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 इज द करेक्ट आंसर। Yes, Mask of Conquest by Gauri Vishwa. So, next question. In which poem does Allen Ginsberg lament his mother's insanity? I don't know this information. हमको हम बुक में सर्च करके इसको निकाले। नहीं पता था कि in which poem Allen Ginsberg talks about his mother's insanity. Howl, Curtis, Plutonian, Old Sunflower, Sutra.
Allen Ginsberg, you all know, a very famous poet, belongs who belongs to the group of Beat generation, Beat poets, अमेरिकन लिटरेचर में. तो कौन से पोएम में एलन गिन्सबर्ग अपनी मदर की इंसैनिटी के बारे में बात कर, क्या होगा आंसर? यस, आनंद कुमार स्वामी, द डांस ऑफ शिवा. अच्छा, श्रावणी इज सेइंग हाउल. गुड इवनिंग श्रावणी, वेलकम. हमको भी हाउल ही लगा था, बट हाउल इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, इट इज कंडिश. Option number B is the correct answer. I haven't read the book, but I just get the information in the book that it is talking about mother's insanity. Option number B. हमको लग रहा है हम मतलब हम जहाँ से पढ़ के इंफॉर्मेशन निकाले कि B must be the correct answer. It is not Howl, because Howl एक famous poem है. हमको यही ऑप्शन पहले लग रहा था, but actually B is the correct answer. चलो, क्वेश्चन नंबर 20. Who described romanticism as split religion? T.S. Eliot, T.E. Hume, Ezra Pound, Virginia Woolf. कौन बता सकता है? मतलब आप गेस भी करो, हो जाएगा. Who described romanticism as split religion? Yes, Shravani, Kadis is the correct answer. Okay. क्या होगा आंसर? Who described romanticism as split religion? Okay, इसका जो करेक्ट आंसर है that is T.E. Hume, option number B. T.E. Hume. Okay, yes, Papri, B is the correct answer. Question number 21. Which is not a part of mass culture? Which is not a part of mass culture? Films, folk art, books, music. Cultural studies का ये question है. Which is not a part of mass culture? क्या होगा आंसर? Question number 21. What will be the answer? Okay, Papi is saying folk art. इसमें भी हमको थोड़ा सा डाउट है. हमको जितना लग रहा है कि बुक्स होना चाहिए, बट आई हैवंट गेट इट एनीवेयर इन द बुक. बुक में तो हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिला, बट एज पर माय गेस हमको लग रहा है कि बुक्स हो सकता है, बिकॉज फोक डांस और फोक आर्ट में भी तो मतलब एक होता तो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, बट बुक्स कैन बी द ओनली थिंग जिसमें ये चीज आ जाते हैं कि कोई लर्नेड पर्सन ही इसको पढ़ सकता है, अदरवाइज नो. द पीपल हु आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड बुक्स. बट फिल्म्स, फोक आर्ट, म्यूजिक, ये तो सब समझते हैं. एंड आई थिंक इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इन दैट सेंस. सो अकॉर्डिंग टू मी बुक्स होना चाहिए आंसर, बट स्टिल I have a doubt. Yes, I have a doubt here कि हो सकता है in that sense folk art, because folk art का भी एक limitation है ना. एक particular जगह में, एक particular location में folk art popular है. तो यहाँ पे mass culture की बात हो रहा है, तो हो सकता है, बट B और C के बीच में मेरा confusion है. तो I will also leave the question in the list of doubtful. चलो, next question पे आते हैं 22. Another very easy question. T.S. Eliot uses a refrain from Prothalamion. Sweet themes run softly till I end my song. ये कौन सी पोएम है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्या होगा बता दो. The wasteland is poker, burnt cotton, dry salvages. एक ही पोएम है एलियट का जिससे आपका बार बार क्वेश्चन बनता है, वही आंसर है. तो these are some of the very easiest question. Yes, Papi, that is why I think so, because it is practiced in a particular tribe, and
Yes, in that sense, folk art is also a mass culture of a region. But if we talk about mass culture irrespective of any places, then फिल्म्स और म्यूजिक जैसा है कि वो एक देश से दूसरे देश में उसका कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है. We can also enjoy Tamil songs. Other peoples can also enjoy Rabindra Sangeet. So in that sense, I think it has a large number of audience. तो books थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसमें होना चाहिए. अब देखो करेक्ट ऑप्शन क्या देते हैं आपका आंसर की. ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा. यस एब्सोल्युटली वेस्टलैंड, इसमें कुछ डिस्कशन की बात नहीं है. वेस्टलैंड में ये रिफ्रेन यूज किया है एलियट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. With respect to the character of Lady Macbeth, Shakespeare diverges from Holinshed a several ways. Which one is incorrect? मतलब आपको wrong option बताना. So difference obviously has not only in the character of Lady Macbeth but in a number of ways Shakespeare deviated from Holyshed's Chronicle. But यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि if we look at the portrayal of Lady Macbeth, then उसमें क्या changes लाए थे शेक्सपियर ने, and कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है. Holinshed gave Lady Macbeth a small role, but Shakespeare gave her a great role. The sleepwalking scene is not in Holinshed. Holinshed's Lady Macbeth does not commit suicide, but Shakespeare's does. Holinshed refers to Lady Macbeth as the fourth witch, but Shakespeare does not. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? What will be the answer? अच्छा, Bhakti is saying D. Yes, I also think that D should be the correct answer because Holinshed में तो ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं था कि मतलब लेडी मैकबेथ एज फोर्थ विच ना तो शेक्सपियर ने बोला है ना हॉलिंशेड ने बोला है. इट इज प्योरली अ गेस बाय द क्रिटिक कि लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच. बट ऑब्वियसली ये प्ले में कहीं पे भी इंडिकेशन इसका नहीं है, हॉलिंशेड में भी नहीं था. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, हमको एक चीज बताओ कि Holinshed's Lady Macbeth does not commit suicide but Shakespeare does. तो क्या कहीं पे भी ये मेंशन है हॉलिंशेड क्रॉनिकल में कि लेडी मैकबेथ का डेथ कैसे हुआ था? अगर सुसाइड वो नहीं किए तो उसका डेथ कैसे हुआ था? ये कहीं पे मेंशन है? आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट बिकॉज हमको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली हॉलिंशेड में क्या मेंशन है लेडी मैकबेथ के डेथ के बारे में. हाँ, ये हमको पता है कि सुसाइड का जो भी चीज है वो शेक्सपियर ने अपनी तरफ से दिया टू हाईलाइट दैट साइकोलॉजिकल डिलेमा और ट्रॉमा जो भी कहो. बट एग्जैक्टली हॉलिंशेड में क्या था अबाउट लेडी मैकबेथ's डेथ? इफ एनीवन नोज प्लीज कमेंट. यस पापी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्रॉनिकल में ये नहीं था एंड शेक्सपियर भी डायरेक्टली कभी ये नहीं बताया कि लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच. बट यस, पता नहीं उसके माइंड में ये था या नहीं. बट एज पर द पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टोरी, as per the portrayal of the story, we can find this. We can find this. ठीक है? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who was the editor of the journal Scrutiny? Very basic question. Who was the editor of the journal Scrutiny? Eliot, Elsie Knights, Williams, F.R. Lewis. तो क्या होगा आंसर? Yes, provoking Macbeth to kill Duncan, Lady Macbeth is considered as fourth witch. अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है who was the editor of the journal Scrutiny, that is option number D, F.R. Lewis. Okay. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे. हु रोट द कासल ऑफ माय स्किन? जमाइका किनकेड, सैम सेल्वन, जॉर्ज लैमिंग, अर्ल लवलेस. तो क्या होगा आंसर? द कासल ऑफ माय स्किन, दिस इज आल्सो अ वेरी फेमस वर्क रिटन बाय. ओके, आई विल आल्सो सर्च फॉर इट एग्जैक्टली इसमें क्या था. अच्छा, कासल ऑफ माय स्किन किसका वर्क है? इट इज अ वर्क रिटन बाय
George Lamming. Option number C is the correct answer. Okay, so that's for today. The rest of the questions we will discuss in tomorrow's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So these are the timings of your classes. Don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.